वो खोल काफी के देर देखिए, तक आवाज आ टकराव रही है चलता क्या? रहा। फिर बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। सुंदरी, आपके घर के द्वार पर बिछाए गए पुराने मैट के बिल्कुल नीचे सावधानी पूर्वक छुपाई गई एक लोहे की चाबी रखी है। मुझ दरवाजे पर मैट के नीचे एक स्पेयर चाबी छिपाई थी। दरवाजे के मैट बहुत मोटे हैं और आसपास भी काफी सामान रखा हुआ है। झुककर नहीं देखा तो पता ही नहीं चलेगा। मैंने सांस रोकी, शरीर मोड़कर एक तरफ कांपती आंखें दरवाजे के छेद से टिकी। बाहर घोर अंधेरा था। हाथ फैलाओ तो ना दिखे। लगता है इमारत की बिजली चली गई है। यह सब तो असल में बस एक ही क्षण की यादगार बात थी। एक पल में मेरी पीठ पर ठंडा पसीना छूट गया। गूंगा बनने न पाया, मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा। आवाज फीकी पड़ते ही कौन सी चाबी? कंफर्म रिसीव्ड। मैंने पहले ही कर दी। मैंने आपको 5 सितारा रिव्यू दे दिया है। आप बेझिझक चले जाइए। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। मैंने कान झमकर ठंडी दरवाजे की सतह से चिपका दी, सांस तक रोक ली। धन्यवाद सुंदरी, कृपया मुझे थोड़ा माफ कीजिए। ऐसा लग रहा था कि वो फोन से रिव्यू कंफर्म कर रहा है। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। सूप काफी बिखर गया है, थैले में सब भर गया है। लेते वक्त सावधान रहना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अरे हाँ सुंदरी, मैं काफी बातूनी हूँ, बुरा मत मानना। अगर कोई लड़की अकेले रहती है तो चाबी दरवाजे के मैट के नीचे मत छिपाओ। ये जगह बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है। ये सुनकर मुझे लगा कि सच में सावधानी की सलाह दे रहे हैं। मेरी तनी हुई नस थोड़ी ढीली हो गई। धन्यवाद, बाद में मैं आपको जरूर बता दूंगी। आपने तो अभी कहा था कि यह जो वस्तु आपने मुझे दी है वह आपके खुद के घर की चाबी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह लगातार मुझसे गुप्त महत्वपूर्ण निजी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या वास्तव में आपके घर की खामोशी के बीच अंदर कोई सच में गहरी नींद में आराम से सो रहा है अभी? अभी मैं इतना घबरा गया था कि घर में कोई है ये भूल ही गया। घबराहट में मैंने पुलिस को फोन करने की तैयारी कर ली। अगर वह फिर से डराने की कोशिश करेगा तो मैं तुरंत कॉल कर दूंगा। मजाक में था। खूबसूरत, कोई बात नहीं। चला, खाने का आनंद लो। कदमों की आवाज दूर होती चली गई। सीढ़ी घाट के अंधेरे में विलीन हो गई। मैं पीठ दरवाजे से सटा, पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े खड़े बिल्कुल नहीं हिल पाया। एक एक सेकंड गुजर रहे थे। मौत सी खामोशी थी। कांपती उंगलियों से मैंने ऐप खोला, ऑर्डर चेक किया। लियू क्यांग ने 3000 प्लस ऑर्डर दिए, रेटिंग 4.7। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। शायद वाकई कोई उबाऊ मजाक भर था, लेकिन पेट भूख से गरगर कर रहा था। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने गहरी सांस लेकर दरवाजा जोर से खोला। काला अंधेरा गलियारे में खामोशी डराती थी। चारों ओर खट्टे तेज लाल तेल वाले नूडल सूप बिखरा, कल्पना चौंका दे। तुमने भौहें तरी और मिचली रोककर पहले गीली थैली अंदर खींची। जमीन के बड़े तेल दाग देखकर मैंने पोछा निकाला और पोंछना शुरू किया। साफ करते करते मैं अचानक ठिठक गई, हतप्रभ महसूस करते हुए। नीचे रखी मेरी रिजर्व चाबी अचानक बिना निशान के गायब थी। फिर चुपचाप दरवाजा बंद कर अंदर से ताला लगा लिया। उंगली इमरजेंसी कॉल बटन पर फंसी रही और पुलिस बुलानी अनिवार्य दिखी, पर सबूत न होने से मैं हिचकिचाई कि चाबी उसी ने चुराई। उसने मुझे कोई भी नुकसान नहीं किया था। पुलिस बस मौखिक चेतावनी देगी, लेकिन वह मेरा अकेलापन और पता दोनों जानता है, इसलिए हाथों पर फिर से ठंडा पसीना छा गया। कांपती उंगलियों से संपर्क सूची खोली, झांग शुए की फोटो टैप कर कॉल किया, जो मेरी यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी दोस्त है और गत वर्ष पड़ोस में आई। वह एकदम कलाकार है, पहले मेरी मदद की है। मेरी हकलाती बात सुनते ही वह जोर से हंसा। शुभ रात्रि। हाँ हाँ हाँ, तुम होशियार हो। डिलीवरी वाला ही बदमाश निकला। चाबी मिल जाती तो छुपाकर बाद में इस्तेमाल करके बता देता। तुमने अभी अभी दरवाजा खोला था खाना लेने के लिए, फिर दूसरा कौन कर सकता था? यकीनन चाबी उसी अजीब से कोने में पड़ी होगी। शायद फिर भी मेरे दिल में बेचैनी है। आज रात सोना दुभर है। ठीक 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 महारानी, मैं आकर तेरे साथ रुकूंगी। अब बात बन जाएगी। उसने मेरे बोलते ही कॉल काट दी। मैंने कॉल दोबारा किया तो ब्लॉक कर दिया। मैसेज आया, मत आना, बाहर खतरा है। उंगलियां उड़ाकर टाइप। झांग शुए का झटपट जवाब मिला। जो बातें तुम छुपाती हो, भूलकर इंतजार मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा ठिकाना सुरक्षित नहीं। जल्दी पार्टनर ढूंढकर बॉडीगार्ड क्यों नहीं बनाती? मैं तुम्हें किसी खास शख्स से मिलवाऊंगा। जब तुम आओगे तब सारी बातें ही करेंगे। पता नहीं क्यों मैं और झांग शुए कई सालों से परिचित हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से वह अचानक बहुत बार मुझे प्यार में पड़ने को उकसा रही है। पहले वह हमेशा कहती थी कि मेरी सिंगल लाइफ कितनी बेपरवाह है। झांग शुए ने फिर जवाब दिया। मैंने सोचा वह रास्ते में होगी, राहत की सांस ली, उसके आने का इंतजार किया। समय बीत रहा था, लेकिन फोन अचानक 10-15 मिनट आगे कूद गया। गड़बड़ था। झांग शुए और मैं पड़ोसी फ्लैट में रहते हैं, पर हम दोनों धीरे धीरे ही चलते हैं। 5 मिनट में वहां पहुंचना था, लेकिन तीनों मैसेज का जवाब नहीं आया। मौत से कांपते हुए जब वो मेरी ओर बढ़ रहा था और खबर नहीं थी, तो मैंने बाहर जाकर देखा। मैंने चाबी उठाकर ताला खोला, फ्लैशलाइट जलाई और दरवाजा खोलते ही कॉरिडोर में जमीन पर तेल सी चुभती दाग छोड़कर सूना दिखा। फिर 3 कदम बढ़ाकर पहली मंजिल के फ्लैट तक दौड़ा। मैंने फोन से दरवाजे के सामने चारों ओर झांका,
पर झांगशुए नजर नहीं आया। तभी अचानक मेरी रूह कांप उठी। हे भगवान, यह तो वास्तव में उसी मासूम डिलीवरी बॉय का खून है जो अभी अभी अपने घर से निकलकर हमारे दरवाजे तक आया था। किसी ने उसकी गर्दन काट दी है, वह मर चुका है। मैं बेइंतहा घबरा उठा, रूह उड़ती सी महसूस, तुरंत जमीन पर झुक गया। कांपते हाथों से मैंने झांगशुओं को जल्दी फोन किया, पर दूसरी तरफ से व्यस्त टोन आई। झांगशु, बिल्कुल नीचे नीचे एक आदमी मर पड़ा है। वो एक पुरुष था। हत्यारा शायद अभी भी पास में हो सकता है। तुम आखिर कहाँ तक आ पहुँचे हो? जहाँ रहो, न आना, जल्द लौट आओ। मैंने मैसेज भेजते ही तुरंत पुलिस को सूचित किया और जो कुछ भी मैंने देखा भोगा सब कुछ विस्तार से बता दिया। मैंने बहुत पुराना साइकिल ताला भी निकालकर दरवाजे पर एक और ताला लगाया और कई चक्कर लपेटे। मैंने सोचा पुलिस या खुद ईश्वर के आने तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। उस मृतक का फीका पीला चेहरा अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। आखिर कौन आधी रात में किसी डिलीवरी बॉय को मारने लगा? झांगशुए, टॉर्च जलाओ, यहाँ खतरनाक हो सकता है। बाहर आते ही बैटरी खत्म होने पर फोन बंद। तुम तुरंत आओ। सोचने की फुर्सत नहीं थी। मैं चक्कर साइकिल ताला खोलने लगा और सू को बार बार जल्दी बोलता रहा। उसने पागलों की तरह दरवाजा तोड़ने लगा। यदि शियांग फान सीढ़ियों के कोने छिपा हो तो चढ़ने तक वह अपराधी नहीं आया होगा। उसने अभी कहा था कि उसकी फोन की बैटरी पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, तो फिर उसे इस हत्यारे का मामला कैसे पता चल गया? चेंगसू अब तक चुपके से मुझसे हर बात में झूठ बोल रहा है। ठंडा पसीना मेरी पीठ से बहकर नीचे गिर रहा था। मैं झिझकने लगा और जानबूझकर झूठ बोलने लगा। ताला खराब हो गया है, अब नहीं खुल रहा। यह बात मानो भौरों के घोंसले को हिला देने जैसी थी। उसने मेरे ऊपर बेतहाशा हमला कर दिया। अचानक सभी आवाजें रुक गईं। अंधेरी रात में अचानक गूंजी दर्दनाक चीख। मैंने दरवाजा उस समय बिल्कुल भी नहीं खोला था। इतनी हल्की फुल्की बेस्ट फ्रेंड वाली बात मत बनाओ। ये आवाज तो उस डिलीवरी वाले की है जो मैंने नीचे घायल अवस्था में पड़ा हुआ देखा था। वह असल में मर नहीं गया। जैसा सोचा था। चलते ही उसने मेरे हाथ पैर थका दिए। मार्शल आर्ट स्टील प्लेट भी लगाई और मेज पर रखी फल काटने वाली चाकू का ठंडा हैंडल मैंने पकड़ा। कार के पीछे कड़क होती एक आवाज सुनाई दी। साइकिल लॉक अभी भी लिपटा हुआ था। दरवाजा सिर्फ एक दरार के लिए धकेला गया था। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट दरवाजे पर डाली और देखा एक कंबल में रखा मक्का थोड़ी देर के लिए हटा दिया। वह दिन रात काम करने वाला बिजली मिस्त्री है जो तोंगजी लू में पाइपें ठीक करता और बल्ब बदलता है। तुम हो? तुम क्या करने वाले? तुमने झांगशुए के साथ क्या किया? मेरे साथ अंदर आओ, तो पता चल जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे ही साइकिल लॉक टूटने की आवाज हुई, मैं चाकू लेकर पूरे शरीर को सिकोड़कर कमरे के कोने में सिमट गया। एक जोरदार गरज से कान सुन्न हो गए। जिस भीषण हवा की उम्मीद नहीं आई, टॉर्च की अचानक तेज किरणें अंधेरे को चीर गईं। इलेक्ट्रिक आर्च पर लाइट की किरणें मंद भी हो गईं और मैं कुछ साफ नहीं देख पा रहा था। भोर की पहली किरण ने मेरी सारी ताकत खींच ली, जिससे मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मैं फिर से जागा तो अस्पताल के बिस्तर पर था। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ने मुझे सारी हकीकत सुनाई। शुरुआत से ही जो दरवाजा खटखटाकर मुझसे बात कर रहा था वह असली मैंने तुम्हें भूल गया नहीं था। उस वक्त वाटर इलेक्ट्रिशियन मौजूद था। पिछली रात ही मो डा युएन और झांगशुए मारे गए। उसने काम के बहाने झांगशुए के स्ट्रीमर होने की जानकारी ले ली थी। उसने झांगशुए के लिए च्वांगचेन का धनी ग्राहक टॉप डोनर बनाना, लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी, ब्रॉडकास्टर टॉप फैंस को ऑफलाइन मिलाकर रिश्ता मजबूत करती है। ये उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। मिस्त्री ने झांगशुए को बेहोश कर दिया और बड़े पैमाने पर धमकी भरे वीडियो भी शूट कर। तब से झांगशुए और वह मिस्त्री प्रेम संबंध में आ गए। झांगशुए किसी भी तरह इस मिस्त्री से छुटकारा नहीं पा सकी। बेबस मन से झांगशुए ने प्रस्ताव रखा कि वह किसी अनजानी औरत से मेरी जगह मिलवाए, इसके एवज में मुझे छोड़ दे। और वह अनजानी औरत असल में मैं थी। यही वजह थी कि पिछले महीने झांगशुए बार बार मुझे संभावित साथी मिलवाती, लेकिन मेरी बार बार अस्वीकृति से मिस्त्री का सब्र खत्म हो गया। कल मिस्त्री ने पहली मंजिल पर जानबूझकर मेरे कमरे और कॉरिडोर की बिजली काट दी। असल में वह बिजली ठीक करने का बहाना बनाकर मेरे कमरे में घुसना चाहता था, लेकिन बिल्डिंग के दरवाजे पर उसे मेरे खाने का डिलीवरी बॉय मिल गया। तभी उसे ख्याल आया मो डा युएन बनकर मेरे कमरे में घुसकर छेड़ेगा, इसलिए उसने कहा खाना वहीं ऊपर भेज दे। लेकिन डिलीवरी वाले ने भी जिद की और खुद खाना पास लाया, जिससे बहस छिड़ गई। पानी बिजली वाला गलती से कट्टर चाकू से डिलीवरी बॉय को मार दिया। I have always enjoyed Father's Day. It was the one day of the year where I could escape from the world with Dad, and we could just be. This year, Dad chose a camping site near the lake so we could go fishing. At 15, I complained, but I was pumped to go. When we got to the campsite, it was magnificent.
tall pine trees, a glassy lake, and that refreshing smell of nature. But we weren't alone. Close to our campsite was a set of two men who had set up camp. They didn't seem like the normal camping type, grimy, loud, and were constantly looking in our direction. I saw Dad's jaw get tighter and tighter every time they would laugh too loud, or even if they overstayed their gaze and looked for a little too long. After a certain time, Dad got up and said, "Let's go find a better spot." I could feel the concern in his voice, so I didn't argue. We packed up and moved to a different spot. It was closer to the highway, so we could still hear the echoes of truck horns coming from a distance. I kind of hated the spot, as I wanted to go to a more secluded one. But now, when I think about that day, I realize Dad had good reasons to choose it. After the sun dipped below the giant trees, Dad and I roasted marshmallows while laughing at his terrible ghost stories. We were enjoying the moment as Dad went on to tell childhood memories of me. I was laughing a lot when suddenly my dad raised his hand and gestured me to stop. His eyes looked all alert. His smile disappeared in seconds. He whispered to me, "Naomi, I want you to hide under the car." I was stunned to hear such a bizarre request. I looked at him, confused, and asked. What? Why would I? My dad cut me off, saying, "No arguments. Just do as I say." I got up and started walking to our car. It was parked under this big tree in darkness. I slid under the car and began hearing footsteps coming closer. A few minutes later, I saw two pairs of boots walking closer to my dad. I had no doubts it was those two freaks from earlier. I stayed quiet and watched. One of them waved to my dad and said, "Having fun?" My dad nodded with a casual smirk and asked, "You guys need something?" The other guy responded with a creepy chuckle. "No, just came to chill with you guys. Where's your daughter?" I could see both of their eyes scanning our campsite like hawks. My dad sat down near the fire, maintaining a very calm demeanor. Nudging the hot burning coals into the fire with a campfire poker, my dad responded, "She went out for a fishing. It'll be great if you guys leave." The two guys exchanged a weird look. Then one of them started walking towards our car. My heart hammered in my chest as I noticed a pair of boots coming towards me. My dad got up, still holding the poker in one hand, and yelled, "Didn't I tell you to leave?" The other guy, who was closer to him, responded, "He's just gonna take a pee. Don't worry, unless you have something valuable in your car." Saying this, he cracked an annoying laugh. The other guy stopped a few inches away from our car and aimed at a bush. I could hear him humming while he released himself. Deep down, I understood why Dad wanted me to hide under the car and not inside. The guy's probably checking the car right now, trying to figure out if I'm in it. I stayed calm, kept my breathing normal. Once done, he went back to my dad. Both of the jerks wished him good night and started walking away. I was smart enough to know that it'd be best to wait, then go back to my dad, because those freaks might keep an eye on us from far away. In the next 5 minutes, I watched my dad work in winks. He got all of our things except the tent. He didn't care for the tent. Loaded everything in our car, and as soon as he unlocked the car door, I hopped into the passenger seat. Dad made a call to the nearest police station and told them about two guys following us. We didn't go home from the campsite. We went straight to the police station. My dad was right. Those two jerks did follow us. Only they didn't know my dad is way smarter than them. The moment their car came close to the police station, a cop car blocked their way. They were taken into custody for following us and stalking a minor. My dad didn't even flinch when the cops asked him if they were the guys from the campsite. He looked them in the eyes and said, "You're lucky I brought you to the cops instead of leaving your lifeless bodies buried in those woods." I try to be as fearless as my dad. And to all the campers and wilderness lover out there, always follow your instincts in the wild. Father's Day always hits hard for me.
Social media is crowded with perfect family pictures and people honoring the memories I'm jealous of and can't relate to. For me, it's always been just Dad and me, and it still is. He's 65 now and lives in Pinewood Care Home, with dementia pulling at the edges of his mind. Some days, he remembers me. Other days, he's just a polite stranger in a suit. On Father's Day, I drove to the care home to pick him up. The care home staff were helping Dad to get in the car when Nurse Ira came to me. Clara, you should know your father's daily routines have altered since he got diagnosed with dementia. Often at night he wakes up and... I frowned and asked, And? as if she covered some hidden truth. Nurse Ira replied, I would suggest you take one of our helpers with you. It's a free service, and handling a patient alone... I didn't let her finish. The patient is my dad, and no thanks. I can take care of him for the next 48 hours. After all, how hard can it be? Saying this, I got into the car with my dad, buckled up right beside me. I looked at Nurse Ira one last time, and she smiled awkwardly. The drive home was calm. Dad was staring at the streets with his curious eyes. After a long time, he had stepped outside the care home. When we reached my apartment, I took him to the guest room, which I decorated with a flower vase and fresh linens on the bed just for him. He sat down on the bed, looked at the ceiling, and then said, "Clara, I'm hungry." Tears of joy rolled down my cheek. It's been a while since my dad called me by my name. I rushed to the kitchen and made sandwiches for both of us. The next few hours went like a dream. We both ate together, laughed, and recalled some distant memories from my childhood. It was great to see Dad being Dad. After dinner, I asked him if he would like to watch a movie, and he agreed. We both lay down on the couch in the living room and began watching The Lion King. Well, I was watching Dad, how his face changed in excitement seeing the movie. I guess I was quite tired, hence I don't remember falling asleep. I woke up with a weird silence. The movie has ended. The screen has paused in the credits. I looked beside me, and my dad wasn't there. My heart skipped a beat. I called out. Dad? Dad? My apartment was in complete silence. I got up from the couch to look for him. Next to the living room, there's a dimly lit corridor. My bedroom is at the end of it. I stood in front of the corridor. My back was facing the other end of it. I called out again. Dad? Where are you? Just then, I felt someone run behind me, chuckling. Turning back, I saw no one. I switched on the corridor light and found my bedroom door half ajar. I tiptoed to the bedroom, trying not to spook Dad if he's inside. But as I stepped in, I was left dumbfounded and horrified at the same time. My dad has opened the big window of my room. Half of his body was already out as he leaned down, looking at the streets. My voice shook as I called out to him this time. Dad, you need to step back. He slowly rotated his head to look my way. His face was different. He didn't look like my dad at all. A scary smile was spread across his face, and his eyes were bloodshot. "You should jump," he said in a chilling voice. Terror numbed my veins. What? What are you saying, Dad? Tears welled up in my eyes. He then backed up and started walking towards me. He was walking slowly, like a baby trying to learn how to walk. "You should jump. I can push you," he chuckled. I don't know why I was stepping back, because it was my dad having the worst episode, but I was horrified to witness it. I understood why Nurse Ira warned me in the morning. My phone was thankfully in my pocket. I took it out and dialed the care home. Once I informed them to come to my address, my dad stopped. His face changed from smiling to hatred. "You want to send me back to that cage?" he screamed, and then started bashing his head on the wall. I watched in horror as he screamed and continued this madness. My body froze in trauma. I couldn't move until the blood rushed in. That's when it hit me. My dad's not well. He'll never be. I sprinted at him and grabbed by the shoulders.
Thankfully, I was stronger than him. I pulled him away, and he fainted. When the caregivers took him into the ambulance, I was crying like a 9-year-old standing on the sidewalk. Nurse Ira hugged me, and I cried even more. The worst feeling